behalf of the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, I, Taha Hasek, the Secretary at the department there, welcome all here. Dignitaries present, Minister of Social Welfare, Shri Subhash Phaldesai. I have got the State Commissioner for Persons with Disabilities, Shri Phaldesai, and a special guest today who has joined us specifically in regards to certain announcements which we'll be making for the upcoming International Purple Fest. Today, sectors from which we would be discussing about two subsectors. So I have got the Purple Conventions, जिसमें there is a convention in regards to International Conference of Inclusive Education, and I have got Purple Spectrum, जिसमें we will be having the International Purple We Care Film Festival. We are very happy to collaborate for both the events with the organization named We Care Film Festival and Brotherhood. And the man behind it, Mr. Satish Kapoor, is here to tell us more about it. In this regards, I will also extend, I will request our State Commissioner for Persons with Disabilities to address the gathering. Sir, Namaskar. Honorable Minister for Social Welfare, Subhash Phaldesai, sir, Secretary Taha, and our guest today, Mr. Satish Kapoor from actually press conference announced that we have already started receiving nominations, documentaries, applications for film festival, which is going to be curated by Brotherhood. And there is a special jury which Satish will tell us who are the jury members. They are very reputed and renowned people from the film fraternity. And so, what is the objective of this film festival? Last year Purple Festa similar film festival, but there was no competition. So this time there are entries which are being invited from across the country and across the globe, because this is an international Purple Fest. So as I said earlier, through these movies or films, we want to create the sensitization among students, among non-disabled people. And movies that people can connect to movies. Last year, this film festival was excellently curated by Mr. Satish Kapoor. It was for 2 days at Inox. We had students from across the state who came and watched these movies. Person with disability जे आमचे भाव आसा भयण आसा तांच्याकडे पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आमचो आसा आनी तो जर आमी बदलतले जाल्यार तो बदल जो आसा तो आमकां मुविजांना वी कॅन डायरेक्टली कनेक्ट टू दॅट. देर आर मेनी मेन फ्रेम मुवीज तुमी जर पळयता की तारे जमीन पर आसतले किंवा मर्फी अशे खुबशे मुवीज मेन जावून आयले, पण दीस डॉक्युमेंटरीज, दीस फिल्म्स वीच आर बीन curated, which are going to be shown for purpose, these are short documentaries, and many of these documentaries are created by persons with disabilities themselves from across the globe. So this is a fantastic opportunity for people to come forward, send their entries, and we have best people to judge and curate. The 12 selected movies will be shown during the Purple Fest. Before that, there will be a jury meeting. They will scrutinize all the applications. They will go through the movies. There will be a process which Satish will tell us. And I think this is going to be a very exciting film festival that we are going to launch during Purple Fest, International Purple Fest. Second thing that we are announcing today is the Inclusive Education Conference. Very interesting part about this film festival is the partners for this film festival is none other than United Nations, which again with the help of Brotherhood, there is Satish Kapoor, we are collaborating with United Nations for this film festival. And we are expecting a lot of locals from Goa, persons with disabilities, to send their entries. We know that there are many persons with disabilities within Goa who are very good at doing it. They are already doing short documentaries, so we request them also to send their entries. Second thing is एक बरी व्हडली कॉन्फरन्स इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशनाचेर जातली. रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट आसतलो किंवा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसतली. ह्या दोन्ही गजाली भितर, दोन्ही एक्टा भितर देर इज लॉट ऑफ एम्फसीस ऑन इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन. म्हणजे जो भुरगो चायल्ड विथ स्पेशल नीड आसा ताणें रेग्युलर स्कुलान वचचें किंवा रेग्युलर स्कूल कॅनॉट डिनाय एडमिशन टू अ चायल्ड विथ डिसेबिलिटी. पण हे म्हणटाना आमकां
जे टिचर्स आसा जे रेग्युलर स्कुलांनी शिकयता तांकांय तयार करपाक जाय बिकॉज दे आर नॉट यूज टू हँडल चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज इट इज नॉट देअर फॉल्ट बिकॉज द ट्रेनिंग मॉड्यूल दॅट दे हॅव गॉन थ्रू डज नॉट कवर दीस सब्जेक्ट सो हाज्या खातीर एक इन्क्लुसीव एज्युकेशनाचेर कॉन्फरन्स दवरिल्ली आसा आनी ताज्या खातीर आमी कोलॅबरेट केल्ले आसा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सीस मुंबय आनी तांची फेकल्टी आसतली आनी पेपर्स आमी इन्वायट केल्ले आसा सो दे ऑलरेडी सम एंट्रीज वीच हॅव कम सतीश कपूरजी विल टेल अस मोर अबाउट इट and these are few this press conference was for specifically announce two major events which are part of International Purple Fest. That is the International We Care Film Festival and International Summit on Inclusive Education. I would now request Satish Kapoor from Brotherhood, who is one of the very key organizing person in the International Purple Fest. He was with us last year as well. He was he played a very major role in the success of last year's Purple Fest. Yeah, I mean movies throughout movies which are going at announced for the for the regular students everything was curated by Satish so beautifully that everyone appreciated the movies that were shown during all those days. I would now request Satish to kindly give more details about both these things. Thank you sir, thank you very much. इंग्लिश हिंदी चलेगा ना सर दोनों? देखिए सबसे पहले I would like to say one thing that Goa has become the only state in India, I don't know whether across South Asia or Asia, first venue which is accessible for all entertainments, including movies, including infrastructure. So this is the initiative taken by the ministry and the state commissioner's office of Goa. तो ये एक इतनी ऐसी बात है कि जो हम दिल्ली में भी यदि हम करते हैं तो ऐसा एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और व्यूअर वाइज यानी कि हम सिनेमा भी यहाँ देखना चाहते हैं इवन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा में भी हो रहा है तो वहाँ पर भी एक्सेसिबल फिल्म्स को लेके अलग एक स्लॉट है और वी केयर फिल्म फेस्टिवल जो हम लोग कई सालों से कर रहे हैं पिछले साल हमने जो किया तो जो सेंसिटिविटी यहाँ के बच्चों में हमने देखी है वो और स्टेट के बच्चों से ज़्यादा बेहतर है वाई इज सो बिकॉज गोवा इज ए वेरी नेचुरल स्टेट एंड इफ वी आर लिविंग इन ए नेचुरल स्टेट विच इज क्लोजर टू द नेचर वी बिकम मोर नेचुरल तो दिस इज अ गिफ्ट बाई Goa nature, Goa or the by the Goa. So first of all, ये एक मैं शेयर करना चाह रहा था और We Care Film Festival we have been organizing since 2003 and I am happy to share with you that till date we have organized this festival at 199 venues and this is going to be the 200th venue in the Purple Fest in Goa. और इसमें विद फाउंडिंग पार्टनर्स यूनाइटेड नेशंस फॉर इंडिया एंड भूटान एंड यूनेस्को दे आर आवर फाउंडिंग पार्टनर्स एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल वी रिसीव अराउंड 300 फिल्म्स और इसमें मैराथन जूरी मीटिंग हो रही है एंड दिस जूरी मीटिंग इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि पीपल आर वाचिंग इन ए रूम एंड दे आर जस्ट रेटिंग नो वी आर गोइंग एट 4 स्टेज की स्क्रीनिंग जो सिलेक्शन हो रहा है 4 लेवल पे हो रहा है इसमें we have involved some institutes of mass communication and journalism. Their students are watching films and rating films. तो यहाँ पर भी एक ऐसी पर्पस है कि जब हम लोग फिल्म देखते हैं और वापस आ जाते हैं और जब देखते हैं और रेट करते हैं तो दोनों में सेंसिटिविटी का बहुत फर्क पड़ता है तो इसका फायदा हमको ये होता रहा है पिछले सालों से कि हर बार जो फिल्म्स हैं वो और अच्छी बन के आती है क्योंकि जो लोग फिल्म देखते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीख के दे लर्न बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एंड दे मेक गुड फिल्म्स तो 3 लेवल पे हो गए फाइनल जूरी हमारी आवर विल बी हेल्ड इन बॉम्बे इन विच मिस पाटेकर एंड डॉक्टर गोन दे आर गोइंग टू बी दी ये जूरी मीटिंग एंड फर्स्ट व्हील चेयर वुमेन शी विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस ऑफ इंडिया नेशनल पेट्रियन था वो she will also be part of उस तरह के लोग हमारे जूरी में आते हैं और जहाँ तक गोवा की फिल्मों ने भी अवार्ड जीते हैं इस
फिल्म फेस्टिवल में, पिछले जो फिल्म फेस्टिवल थे। और मुझे लगता है कि आप यदि आके देखेंगे फिल्म फेस्टिवल में, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने 12 शो किए थे और उसमें आई थिंक 10,000 पीपल केम टू वॉच फिल्म्स, स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स। और स्टूडेंट्स का आके जो उनका इंटरेक्शन था विद द पब्लिक आफ्टर दी, क्योंकि हम फिल्म ही नहीं दिखाते हैं, फिल्म के बाद हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन होता है कि बच्चों ने क्या सीखा। तो बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म इज ट्रीमेंडस। आप यदि उसको आगे एक बार देखेंगे तो वो अपने आप में ही एक मतलब एक आपका न्यूज़ बनती है बच्चों को दिखाने का। तो वो एक था। और इस बार हम लोगों ने प्लान किया कि 8 तारीख से 13 तारीख 6 दिन का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में हम कम से कम 25 कंट्रीज की फिल्में दिखा रहे हैं और 25 कंट्री से और एक कंट्री से कम 3 या 4 फिल्म होगी, तो 100 प्लस इसमें हम लोग फिल्म दिखाने वाले हैं। टोटल जो मिनट्स हैं हमारे पास 1350 मिनट है। इन एडिशन टू दिस we have also organized one of our partner organization. They are organizing films, audio descriptive films. तो 3 या 4 फिल्म हम लोग ऑडियो डिस्क्रिप्शन की भी दिखा रहे हैं, जिसमें ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट या जो देखते उन्हीं के लिए नहीं है। यदि आप लोग भी आकर फिल्मों को देखेंगे तो हमको और ज़्यादा समझ में आता है कि वो जैसे पूरा एनवायरनमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि वो डायरेक्टर के साथ बैठ के इसको फिल्म को समझना और फिर ऑडियो डिस्क्राइब करना, वो अपने आप में ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। वो आप एक बार आके जरूर देखें, उसका जो शेड्यूल है वो हम आपको भिजवाएंगे। और आज के तारीख में हम लोग ये मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि गोवन फिल्म मेकर्स, वेदर दे आर स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स और एनी प्रैक्टिशनर, दोज हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, they can send their films even on mobiles also, up to 5-minute films भी वो भेज सकते हैं। 29 दिसंबर इज द लास्ट डेट। और उसमें भी हम लोग 3 अवार्ड्स हम लोग रख रहे हैं, कैश अवार्ड है, उसमें सर्टिफिकेट अवार्ड है। तो ये अनाउंसमेंट आज हम लोग करने जा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सो दैट कि वी कैन हैव सेपरेट सेक्शन फ्रॉम गोवा। गोवा से कुछ फिल्में हैं, लेकिन गोवन फिल्म मेकर के लिए अलग से एक हम लोग स्लॉट रखते हैं, so that we can encourage the filmmaker and special educator। क्योंकि इसमें एजुकेटर्स ने अगर हमारी बात होती है तो उन लोगों ने जब वो बच्चों के साथ काम करते हैं तो दे ऑलरेडी रिकॉर्ड समथिंग कि बच्चे का जो उसमें एजुकेशनल नीड्स को लेकर उन्होंने क्या इंटरवेंशन दिया और किस लेवल तक वो बच्चा ठीक हो। तो वो उसमें हम लोग इसमें अनाउंसमेंट है आज का। दूसरा वी हैव बीन गोइंग टू ऑर्गेनाइज पर्पल इंटरनेशनल समिट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें अभी तक हमको 50 पेपर्स मिले हैं फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जिसमें से 30-35 हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट पेपर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और आज अनाउंसमेंट ये है कि हम लोकल जो एजुकेटर्स हैं फ्रॉम गोवा, दे कैन कम एंड सबमिट देयर पेपर्स फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। और उसमें उनको प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा, सो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन गोवा। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है, गोवा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन, इस बार जो अनाउंसमेंट है डॉक्यूमेंटेशन से जो टीचर्स हैं वो सीखेंगे। इवन किसी को भी कोई प्रॉब्लम भी होती है कि हाउ टू डॉक्यूमेंट दी केस स्टडीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस बीइंग डन बाय देम, वो हम लोग उनको बताएंगे। थीम्स हमने उनको दे दी है कि कौन कौन सी थीम होगी। तो कॉल फॉर पेपर्स भी है और ये फिल्म फेस्टिवल। दैट्स इट सर, थैंक यू। एक चीज और बताओ, इसमें हम लोग 4 या 5 सेशन, 3 सेशन हम लोग ऐसे रख रहे हैं जिसमें कि हम बात कर रहे हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द लाइफ ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। दूसरा, बेंगलोर से 2 लोग आ रहे हैं जो कि सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। जो बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर भी हम एक 1.5-2 घंटे का सेशन रखने वाले हैं। और इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, कुछ सिलेक्टेड 5 से 10 पर्सन विद डिसेबिलिटी विल कम एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फेस्ड बाय देम ड्यूरिंग देयर एजुकेशन। What is the role of
spirituality or disability. The role of spirituality in the life of persons with disabilities and their family. नमस्कार. तुम्ही सगळ्यांना खबर आसा की आयची प्रेस कॉन्फरन्स विशेष करून कारणा खातीर दवरिल्ली आसा. ताच्या भायर आमकां एक गर्व आसा की आमचे मिस्टर गुरुप्रसाद पावसकर, the State Commissioner for Persons with Disabilities in the Government of Goa. He has been awarded the Best State Commissioner for the Persons with Disability in the country. Also, Mr. Taha Azik, the Secretary of the State Commissioner's Office, he has also been awarded Sarvashreshta Divyangjan Puraskar. So, on behalf of my department, Social Welfare Department, all the NGOs working in the disability sectors and from all the people from Goa, we congratulate Mr. Guruprasad Pawaskar and Taha Azik for this award, a worthy award for their commitment towards the disability. Besides this, we are thrilled to announce the Purple International We Care Film Festival. We have amongst us Mr. Satish Kapoor from Brotherhood, who has been associated from last year, and this year he has bigger plan. And I am very grateful to you for associating with us, collaborating with us with all these new initiatives which otherwise we would have missed. This We Care Film Festival, organized in collaboration with the United Nations APJ Institute of Mass Communication Delhi and Brotherhood as a part of Purple Festival. This is not just a cinematic celebration, but a platform to shed light on the narratives of individuals with disabilities. Running from January 8th to 13th January, this festival is spearheaded by Government of Goa, and DPWD, Government of India, aims to harness the power of film to instill awareness and understanding of the disability issues all across the world. Simultaneously, the Purple Festival Summit on Inclusive Education, taking place from January 9 to 11 January 2024, is a collaborative effort with the Tata Institute of Social Science, Mumbai, and Brotherhood. This summit seeks to foster learning and discussions on need-based educational implications for the overall development of children with disabilities in our schools. We encourage filmmakers and researchers to actively participate in these events. The call for entries for Purple International We Care Film Festival is open until December 29, 2023. Short films up to 5 minutes of duration addressing disability issues we welcome. The cash prize is amounting to rupees 60,000 rupees await the top 3 entries. For the Purple International Summit on Inclusive Education, we invite educators and researchers to submit abstracts on various themes related to inclusive education by December 15, 2023. Selected papers will be presented during festival and published with ISBN. So, with Purple Festival is not a celebration, it is not an event, but Purple Festival is a movement. I would call it as a movement or mission on which we want to achieve the inclusive education in all our schools, at the same time empowering all the persons with disabilities in the education system, in their social life, empowerment, economically to empower them, to see their placements also, empower them in sports,
So whichever activities a normal person does, they should not have any problem, and we should have accessible venues, whichever, wherever, everywhere. So this is our aim to get everything. So people most of the time people ask about this particular venue is not accessible, but we are trying our best to put in the infrastructure which is required for accessible venues. But everything is not possible within a short span of time, and to make all this awareness, get them exposed or get their talents exposed in various fields like sports. We will be having a separate para nationals happening in Goa during the Purple Festival. We will have 21 conferences addressing the issues of. We will have the debates, we will have the master classes. So all those achievers and celebrities from amongst the events will come on a platform, and they will address the issues related to the problems of disabilities, accessibility, education, their if atrocities, framing or recommending the narratives or recommending the initiatives to form a good strong policy to frame the required act as we move forward. So हातूंतल्यान आमकां एक सगळ्यात करपाक जाय, एक अंडरस्टँडिंग दवरपाक जाय. आमी म्हणनात की 100% आमी एक्सेसिबल आसा म्हणून, पूण गेले ते पर्पल फेस्टाच्या नंतर जे इनिशिएटिव्ह आमी घेतिल्ले, पीपल एक सेन्सिटायझेशन जाल्लें आसा, अवेरनेस जाल्लें आसा. नवे बिल्डिंग्स येतात, तातूंत भितर आमकां एक्सेसिबल करपाक जाय. ओल्ड बिल्डिंग्स आसात त्यो आमकां फास्ट मोडाचेर एक्सेसिबल करपाक जाय. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हॅपनिंग इन ऑल अक्रॉस. सो आमी एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, एवरीथिंग विल नॉट बी इन प्लेस on a very first instance within 1 year of time. There are a lot of questionings regarding accessibility or other issues, but we will address that one by one and we will try to resolve it. And with this kind of efforts that we have put in, आणि आमकां ताका रिकॉग्निशन आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडच्यान आयिल्लें आसा. द बेस्ट स्टेट कमिशनर म्हणून अवॉर्डूय मेळ्ळें आसा. बेस्ट आमचो सोशल दिव्यांगजन म्हणून आमकां अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. दिस सिग्निफायज दॅट द रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन्स which comes from the Honorable Prime Minister also and from the Ministry of Social Justice, Central Government. So I am very thankful to the Social Justice Ministry from Center and all those who have recommended who have declared the award for Goa. Thank you very much. इंटरनॅशनल लेवलाच्यान कोण येवपाचे आसा ऑलरेडी इंटरनॅशनल पबल फेस्ट आम्ही जेन्ना ऑनरेबल चीफ मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केलो फाटल्या म्हयन्यांत, तेन्नाच आमी इंटरनॅशनल गेस्ट आपयलो. ताचें नांव आशिल्लें स्पर्श शाह फ्रॉम USA. स्पर्श शाह इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, he wears a lot of hats. Similarly, we are going to have a lot of international persons with disabilities who are leaders in their own way and who are inspiration to others. So we are having, I will not name, we are going to keep it as a surprise, but we have somebody coming from Scotland who has excelled in sport, a person with locomotor disability and does surfing. So you can just imagine a person does not have. And national very interesting is हे सगळे आमकां एक्सपिरियन्स करपाक मेळटले गोंयच्या लोकांक. हे ब्लायंड आसून सुद्दां हे गेम्स कशे खेळटा. सर तुम्ही एथलेटिक्साचे उलयले, सो रिसेंटली शीतल देवी खूब चर्चेन आशिल्ली, सो ती बी कितें येवपाचे कितें चान्सेस आसा? आमी कितें करतले, very interesting question. So we are going to have experience zones which is going to be set up by Paralympic Association. So what this experience zone is? So जे डेलिगेट येतले किंवा जे विजिटर्स येतले, they will be given an experience to sit on the wheelchair and play basketball, play table tennis, and all this ही आसा नाव आपल्याला शीतल देवी आणि शीतल देवी बाकीचे गटांचे जे विनर्स आसा, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट,
they will be part of this experience zone. Then after they will interact with people, they will be part of the whole para-athletic games as well as part of this experiential zone. So delegates can interact with them, talk to them, take photographs with them, take selfies with them. These guys are inspiration to all of us. So all these people will definitely be there. We are trying our best to invite them. Invitations are already gone. We are waiting for the other logistics. The Prime Minister. We have placed our request, and the Honorable Chief Minister will discuss this with the Honorable Prime Ministers. As of today, we cannot make any commitment, and we are waiting for the response from the Prime Minister's office. कारण त्यांनी सगळ्यांक म्हणला की अडॉप्ट करपाची गरज आसा अशें फेस्त सो लोकांचे ह्या सर्वीची फेस्त म्हणून काय आपले बीन No, always the Honorable Prime Minister has motivated us, inspired us, and he has taken a good cognizance. Right, last year's couple festival, he has appreciated all across, not once. During his Man Ki Baat program also, he spoke about 3.50 minutes on this Purple Festival alone. त्याच्यानंतर त्यांनी various बाकीच्या आपण पॉम्पलेट केले आसा आणि काय म्हणलं की गोंयान भितर हे जाता ते खूप बरी सुरवात केली आसा. सो नीती आयोगाच्या मिटिंगेन ताणें सांगिल्लें आसा एवरी स्टेट should organize such kind of purple festival which boost the morals of the bands. सर गेल्या वर्षा पर्पल फेस्ट यंदा परत इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट काहीतरी जबाबदारी तुमच्यावर वाढली असेल. हो, जबाबदारी वाढलेली आहे कारण गेल्या वर्षापेक्षा या वर्षी आपण अजून मोठ्या प्रमाणावर इट वुड बी 3 times मोर आपले रजिस्ट्रेशन डेलिगेट्स मग त्यांना लॉजिस्टिक लागेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लागेल आपल्या एज्युकेशन स्पोर्ट्स मग आपली कॉन्फरन्सेस आपली एक्झिबिशन्स ही 3 पटीनं वाढणार आहे. सो याच्यामध्ये आपल्याला एक्सपिरियन्स हे आपलं नवीन नवीन जे प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आलेले आहेत न्यू इन्व्हेन्शन न्यू रिसर्च न्यू इम्प्लांट्स this startups, everything will be much more. From the last year onwards, everybody has started preparing for the next Purple Fest, and it is happening international. It is still bigger. फाटल्यापटी तुम्ही कदंबा महामंडळात बघितले की व्हीलचेअर एक्सेसिबल जावपाक जाय म्हणजे ताजें कितें जालें व्हीलचेअर एक्सेसिबल नव्यो बसीस आयल्या इलेक्ट्रीक बसीस आयल्या विच आर ऑलरेडी फ्लायंग ताच्या भितर ऑलरेडी व्हीलचेअर प्रोविजन केल्लें आसा इन द स्टार्टींग बॅच 2 कितें सीट्स तांच्यानी व्हीलचेअराक दवरल्या 30 तारखेक आनी नव्यो बसी येता 30 कितें बसी सुरवाच्यो आसा त्या 30 बसीस अशें म्हाका दिसता फिगर आय डोंट नो 20 मोर ऑल्सो त्या बसींनी सुद्दां व्हीलचेअरा खातीर प्रोविजन केल्लें आसा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट फक्त व्हीलचेअरा खातीर प्रोविजन भितर करून फायदो ना लो फ्लोर आसपाक जाय सो ऑल दीस बसीस आर लो फ्लोर बसीस वेर व्हीलचेअर कॅन गेट इन. द बेस्ट पार्ट अबाउट खूब जाण आमकां विचारता की पर्पल फेस्ट करून तुमकां गोंयांत कितें फायदो जालो. फायदो असो जालो की ऑल दीस थिंग्स वीच आर हॅपनिंग only because we managed to create that kind of awareness and sensitization across the bureaucracy, across the government officers, across the society. म्हणून आमकां गजाली पळोवंक मेळटा. आमी जर म्हणटा जाल्यार इफीचें तुमी इफीचें उदाहरण दिता की इफी म्हाका दिसता आतां 20 वर्सां जालीं बट EHV वॉज नॉट एक्सेसिबल. थोडे इश्यूज अजूनय आसतले आमी म्हणना की आतां EHV 100% एक्सेसिबल जालें बट वी कूड टेक व्हीलचेअर आतां व्हीलचेअर पयलीं रोडावरूच येताले आतां व्हीलचेअर आयनॉक्सा पर्यंत तरी पावता. आतां थिएटरा भितर पावले आमकां फुडल्यो सीट्स काडच्यो पडटल्यो ते काडपाक सुरू केले आमी सो दॅट दे कॅन बी देर इन द फ्रंट रो एंड वॉच द मुवीज. सो ऑल दीस चेंजीस स्लोली वी आर kind of we can not only visualize but we can see these changes happening on the ground. कदंबा भितर आतां जे कदंबाचे बस स्टँड्स आसा ताचे भितर आतां शॉप्स रिजर्व केल्ले आसा पर्सनल डिसेबिलिटी ते ह्या पयलीं केन्नाच जालें ना. हें कित्याक खातीर जालें बिकॉज people realize that personal disabilities have the potential and it is the duty and role and responsibility of the government to provide this. And this is a ongoing process. See, this year we have done 10 things. Maybe next year we will do another 15 things. सरान म्हणाले की जो ओल्ड बिल्डिंग्स ते आमी एक्सेसिबल करतले पण एका दवरले पावचे ना. 20-25-30 वर्सां काय जालें ना पण एका वर्सा भितर वी आर स्लोली स्टार्टेड द प्रोसेस स्टार्ट ऑफ वी हॅव कितल्यो बिल्डिंगी आसतात पयलींचे सगळ्यो कमी बिल्डिंग आसा जाय
ते नॉन एक्सेसिबल कारण त्यांना एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्सूच नाशिल्ले तो आतां एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स आयल्या तो आतां पणजे भितराक थोड्यो बिल्डिंग्स करपाक घेतल्या थोड्या आतां नेक्स्ट फेजान फ्यू बिल्डिंग्स आर सिलेक्टेड आयडेंटिफायड इज द आन्सर टू युअर क्वेश्चन अक्रॉस द स्टेट मडगांव आसतली वास आनी आयडेंटिफिकेशन अशें केलां की ज्या जाग्यार मुवमेंटचो रस्तो आहा हांगा त्यो बिल्डिंगी पयली आयडेंटिफाय केल्या आनी ते सुद्दां एका दोवर जावचें ना एक बिल्डिंग आमी आयडेंटिफाय केली न्ही ती एका बरोबर एक्सेसिबल जावची ना सो देर आर टू थिंग्स वन इज एक्सेसिबल सायनेज मागीर एक्सेसिबल देर इज लॉट ऑफ सिविल वर्क ऑल्सो विच इज रिक्वायर्ड आनी खुबश्यो अडचणी जातात ओल्ड बिल्डिंग आसा जागो आसता तितलो पाथवे मेळना सगळ्यात पयलीं सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचें बिल्डिंग So the social welfare office Maheshwara changed that to a more accessible place, and we have also identified and done an access audit of 1,400 students audit done. 1,400 aided schools and government schools for and colleges also. And आता first one हम लोग शुरू करते हैं to make these schools accessible for children with disabilities. Can I add? मेरा एक सबमिशन है सर आप लोगों के पास यहाँ पे से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया से भी होंगे कुछ सोशल मीडिया से भी होंगे मेरी यूट्यूबर पे होंगे आप लोग आप ये पर्पल फेस्ट आप आइए देखिए इसमें बहुत एक्टिविटीज हैं और एक पवेलियन में या एक जगह पे आपको कम से कम 10 से 15 स्टोरीज मिल सकती हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं चलते फिरते भी चलेंगे यदि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी मिल जाता है उसका आप सिर्फ इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे यू विल गेट एनफ इंफॉर्मेशन तो ये पर्पल फेस्ट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा कि आपके पास समय नहीं होगा कि हम कौन सी स्टोरी करें कौन सी ना करें तो विच इज माय सबमिशन वन डे एक या दो पवेलियन या एक या दो एक्टिविटीज को कवर करेंगे तो यू विल गेट बहुत स्टोरी मिलेगी तो इससे फायदा क्या होगा आपका फायदा होगा हमारा फायदा होगा लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि मैसेज विल गो अक्रॉस द ग्लोब कि दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा स्टेट कमिश्नर ऑफिस ऑफ द गोवा सोशल वेलफेयर ऑफ द गोवा तो फॉर दिस आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसा परफॉर्मेंस कभी आ सकती नहीं लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब ये प्लेटफॉर्म मिला हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लास्ट ईयर हम लोग देख रहे थे कि वी वर हंटिंग पीपल के लिए कि ठीक है आप आइए पार्टिसिपेट करिए यू डू दिस टाइम हम लोग मतलब लिटरली हैरान है कि इतनी अलग अलग चीज़ें हैं मतलब इंडिया इज फुल ऑफ टैलेंट्स इंडिया इज फुल ऑफ कैलिबर इंडिया इज यू नो फुल ऑफ एंथुजियाज्म व्हिच इज वी हैव सीन जब हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में जरा आगे आगे जाके वी बी रिवीलिंग व्हाट ऑल इज देयर लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इट इज वी आर इंडिया इज ब्लेस्ड विद लवली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड देयर इज अ ग्रेट नीड कि मेन स्ट्रीम कम्स एंड अंडरस्टैंड्स कि दे आर an integral part of the inclusive society. That's the main thing. Okay, before we end up, I would like to highlight last year Purple Fest झाल्यानंतर we have not media budget we काय केलं नाही but we got over 500 clips and coverage. I'm very grateful to the media from Goa and others who have covered all this and we have compiled it and it has become a 500 pages book full of information and very good positive thing so I'm very much obliged and very much grateful शेखर कपूर जी सतीश कपूर जी इन्होंने बहुत ही अच्छा इसको इफी से भी ज़्यादा हमें कवरेज दी थी लास्ट ईयर and even today you've been doing wonderful so we expect a similar cooperation coordination coverage from you all the press. Thank you very much and congratulations from press also to the both Thank you. thank you Thank you so much.